Assalamu alaikum. Today we are going to discuss A2 Economics chapter 40, which is related to labor market. Basically, labor market refers to the supply and demand for workers. So supply of labor and demand for labor and workers where they interact, both supply of labor and demand for labor. Supply of labor is from the worker side and demand for labor is from the firm side. Both interact with one another to determine the wage rate and about the level of employment, how many workers are needed, and about the working conditions. तो basically labor market में तीन चीजें हैं. Forces दो हैं, supply of labor and demand for labor. Demand for labor is from the firm side, supply of labor is from the workers and labor side. इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेज डिटर्मिनेशन के व्हाट वुड बी द वेज, ठीक है, एंड हाउ मच वर्कर्स आर नीडेड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन. तो ये सेंटेंसेस आर नॉट मेंशन इन दिस सिलेबस इन दिस चैप्टर, सो वो मैंने थोड़ा सा ऐड अप कर दिया. सो चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम द डिमांड फॉर लेबर. सो व्हाट इज डिमांड फॉर लेबर? Basically, demand for labor is from the firms and from the organizations who need workers to produce goods and services. So basically, demand for labor means number of workers or number of hours of workers services given the wage rate or at given wage rate. Let's suppose if wages are high, firm will demand less labor, and if wages are low, firm will increase the demand for labor. तो बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर हो रही है. बेसिकली many of the principles introduced in chapter 2 we are not talking about this. Basically there is however the fundamental difference. The demand for labor is derived demand. Actually, what is derived demand? Why is mentioning derived? Derived means indirect demand. So derived demand means the workers are not demanded for themselves. Basically one worker, उसका name है वकास, ठीक है, if he is वकास, तो वकास is not demanded for like he is handsome or something like that. He is demanded to work as manager. So basically उसकी services required है. So if worker is working in construction industry, firm needs the construction of house, ठीक है, so that's why they demand the workers. That is why we call it derived demand. Basically जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है. डायरेक्टली वी डोंट नीड लैंड, वी नीड द एग्रीकल्चर. वी डोंट नीड लैंड, we build the house on it. We don't need the entrepreneur, we want his abilities to produce goods and services. So this is what this means, that the firm's demand for labor is due to its decision to produce certain goods and services. So labor is therefore demanded not for its own sake but because it is essential for the production of goods and services. तो ये बात मैंने अभी एग्जांपल्स दी हैं काफी सारी. क्लर्क्स आर एम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द फर्म्स टू कैरी आउट इट्स डे टू डे बिजनेस. द स्ट्रीट नीड्स क्लीनिंग, देयरफॉर स्ट्रीट क्लीनर्स आर एम्प्लॉयड एंड सो ऑन. अभी मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए, दो इसने भी दिए हैं. सो जस्ट कम टू द पॉइंट. Demand for labor, a direct curve, is not given here. So basically demand for labor is derived from marginal revenue product of labor. But what is marginal revenue product of labor? So basically marginal revenue जो है वो है additional worker से receive होने वाला revenue, and product of labor means productivity of labor. So first of all हमें थोड़ा सा understand करना है पहले तो marginal product. What is marginal product? Marginal product is the additional work done by one extra worker. Let's suppose there are, ये मैं workers को employ करता हूँ, these are labor, ठीक है, and this is your their MPL, ये यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ. तो फर्स्ट वर्कर ने let's suppose 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस की, ठीक है, सेकंड ने 8, थर्ड ने 6 एंड सो ऑन. सो why it is decreasing? Additional workers are like reducing in numbers of output. उनकी output क्यों fall कर रही है, यानी marginal product? Because law of diminishing marginal productivity is involved. Economics में हम apply करते हैं कि as we employ more and more units of factor of production, the additional workers or the factor of production will contribute lesser in the output. तो ये वो सीन हो रहा है कि 10 से 8 से 6.
सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। सो हमारे लिए जो काम की चीज है वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, और ये है, इसको बनाने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। अच्छा, सो नेक्स्ट इज द प्राइस। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एम आर पी एल जनरेट करना है, दिस एम आर पी एल विच इज डिमांड फॉर लेबर। बट ये बनेगा कैसे? एम आर पी एल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टाइम्स द प्राइस, यानी हाउ मच वर्कर्स हैज प्रोड्यूस्ड। लेट सपोज एक वर्कर ने 10 टॉयज असेंबल किए और एक टॉय की प्राइस है 100, तो एक वर्कर ने कितने वर्थ ऑफ काम किया? $1000 का। तो व्हाट इज $1000? MRPL, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी एडिशनल वर्कर के एम्प्लॉय करने से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 1000 जनरेट हुआ। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है। सो बेसिकली ये गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एल उसने नहीं लगाया, सो इसको तो डिलीट कर देते हैं। देखें, फर्स्ट वर्कर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख लेते हैं। सिर्फ टेबल हमने थोड़ा सा देखना है कि फर्स्ट वर्कर ने 20 टॉयज असेंबल किए, लेट सपोज ये टॉयज असेंबल कर रहे हैं। सेकंड ने 35। अब इस बुक के अंदर जो लेटेस्ट एडिशन आया उसमें क्या किया उसने? इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट को इंक्रीज किया, यानी कि पहले 20, फिर सेकंड वर्कर ने 35 और उसके बाद 34 एंड देन 30, यानी कि मतलब कि थर्ड यूनिट तक इंक्रीज किया, एंड देन फिर कंजेक्टिवली फॉल कर रहा है। तो वन वन एडिशनल कर लेते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो इनिशियली वर्कर्स हैज आउटपुट हैज इंक्रीज्ड एंड देन डिक्रीज। But most of the books में when you will see marginal product of labor, you will find continuous decrease in the marginal product of labor, यानी एडिशनल वर्कर की जो आउटपुट है वो फॉल कर रही होगी। सो दिस विल आई विल प्रूव इट इन लाइक, इसी बुक के अंदर he has made it the same diagram later on, ठीक है। anyways, so what is MRPL? Marginal product is given, you will multiply it with the price and you will get 200 MRPL. So MRPL, this is demand for labor, okay? So 200, 300, 400 and so on, so on, so on, so on. अब पॉइंट क्या है? हम एक वर्कर को जो वेज दे रहे हैं ना, एवरी वर्कर को जो वेज दे रहे हैं वो फिक्स दे रहे हैं, दैट इज 300। ठीक। सो एडिशनल वर्कर, जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं, दे आर गेटिंग द सेम वेज एट, दैट इज 300। तो अब हमें कितने वर्कर्स इंप्लॉय करने हैं, यानी डिमांड फॉर लेबर क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि MRPL is equal to the wage rate, yes, till the point where MRPL is equal to the wage rate हम एम्प्लॉय करेंगे वर्कर्स को। तो फर्स्ट वर्कर ने कितना काम किया? 200 का, हमने उसे वेज कितनी दी? 300, तो ये लॉस में चला गया। सेकंड वर्कर ने वर्क किया 350 का, बट वी पेड हिम 300, हमने ये भी रख दिया। थर्ड वर्कर 440 का वर्थ ऑफ वर्क किया, बट उसे वेज 300 पे की, तो 40 प्लस है। सो दिस इज द पॉइंट जो कंडीशनैलिटीज है कि हाउ मच वर्कर्स आर डिमांडेड, वी विल डिमांड 4 वर्कर्स वेयर 300 इज इक्वल टू 300। सो यहाँ पर एक टेक्निकल फॉल्ट है, और आपने भी सोचा होगा कि सर इनिशियली ये जो MRPL है वो यूं जा रही है, लाइक इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, फ्रॉम हेयर ड्रॉ करता हूं मैं दोबारा, लाइक ही हैज ड्रॉन लाइक दिस। अब MRPL इंक्रीज हुआ एंड देन बॉल कर गया, और वेज रेट को हम फिक्स कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द वेज रेट, दिस इज द वेज रेट, दैट इज 300। अब 300 इज इक्वल टू 300 फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पे हो रहा है, जो कि ये हमारे पास। बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट यूनिट? व्हाई हैव वी हैव एम्प्लॉयड द फर्स्ट वर्कर? ही इज प्रोड्यूसिंग 200 बट वी आर पेइंग हिम 300। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो प्रीवियस वर्जन ऑफ द बुक था, सेकंड एडिशन, उसके अंदर, सॉरी थर्ड एडिशन, उसके अंदर स्ट्रेट ये था MRPL। सो यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रेट, कोई ऐसा इशू नहीं है। दिस इज द वेज रेट, दैट इज 300 एंड दिस इज द फोर्थ यूनिट वेयर बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो ही बेसिकली ये सारा टेबल और ये कॉन्सेप्ट देने का मकसद क्या था? ये ड्रॉ करना था कि हाउ मच वर्कर्स वी विल डिमांड एज ए फर्म। सो दे आर डिमांडिंग कितने वर्कर्स? 4 वर्कर्स। They will not demand fifth worker. Why? Because he is doing worth of 200 work and we are paying him 300, तो ये लॉस का रीजन आ जाएगा। So this is what the demand for labor is। तो अब डिमांड फॉर लेबर जो है उसने जो फर्दर इंडिकेट किया है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि डिमांड फॉर लेबर in a firm or in an occupation। अब ये theoretical आंसर, the demand for labor by a firm is based upon two assumption। एक, the firm wishes to hire labor is operating in perfectly competitive market। अच्छा, परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट में जो हमारा लेबर मार्केट है वो डिफरेंट होगी, और इम्परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट में डिफरेंट होगी। जो परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट होगी उसमें वेजेस जो है वो कांस्टेंट होंगी।
or wages will be determined by the forces of demand and supply of labor. So this is supply of labor, demand for labor, wages is determined like this, and this will remain fixed. जैसे अभी हमने fix किया ना 300 like this, so this will remain fixed wage rate. Anyways, there are many buyers and sellers in the market. ये perfect competition की condition है, as we have done this in the previous chapters about perfect competition. So no single firm or workers can affect the wage rate. So wage rate remain fixed. पहला point. Second, the firm is a profit maximizer. Its demand for labor is based on its maximizing the difference between total revenue and total cost. So point ये है कि first point तो ये हो गया कि wages are fixed. Second point ये हो गया कि firm is a profit maximizer. So firm will try to employ the workers when its profit is increasing. Simple as that. Next, there are three main factors that determine the demand for labor. ठीक है, by the firm or in an corporation. So demand for labor कितने करने हैं? How much workers we need depends on the wage rate. If wage rate is high, demand for labor is low. Bas, that's it. Second, if productivity of the workers are high, a change in the marginal productivity of labor affect the position of demand for labor. If the workers are more productive, output increases, the labor becomes more attractive, and हम machines नहीं लेके आएंगे, we will demand more labor. So productive workers mean demand for labor high. Next, demand for the product. If demand for the product is increasing and labor are needed to produce that product, so demand for labor is increased. तो ये वन लाइन आंसरिंग, इसको इतने डिटेल में नहीं लेके जाना है. अब ये वो पॉइंट था जो मैं आपको बात कर रहा था कि जो MRPL कर्व है वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है, वो लाइक दिस नहीं बनाना होता हमने, ठीक है. तो इसने प्रूव भी किया कि दिस कर्व, ये जो ये MPC कर्व लग रहा है, दिस इज MRPL कर्व. अब ये प्रूव क्या कर रहा है कि हाउ मच वर्कर्स वी विल एम्प्लॉय. तो डायग्राम थोड़ी सी उन्होंने रॉन्ग ही बना दी है. दिस इज MRPL कर्व. So how many workers we are employing when wage rate is 300? 4. So when wage rate is 400, how much workers we will employ? तो हमारा इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होकर E2 पे आ जाएगा और we will employ less labor. 3. So what will happen if the wage rate falls? If wage rate falls to, like ये मैं रेड लाइन बना देता हूँ, ये to 200, how many workers we will employ? हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा आगे, like we will employ 5 workers. So what we can get from this? As wage rate rise, demand for labor falls. As wage rate falls, demand for labor rise. So this is the proof. So he's like shifting like this and this. So next is supply of labor. So what is supply of labor? Supply of labor represent number of workers or number of hours of workers services at given wage rate. At given wage rate. If wage rate is $2 or $20 per hour, 2 workers are willing to work. If wage rate is $40 per hour, 4 workers are willing to work. This is supply of labor. So wage rate increase, supply of labor will increase. So you can put it like number of hours as well. 12 hours if $20 per hour wage rate है. 14 hours of work if there is high wage. Okay. So basically ये situation हो गया. So positive relationship between wage and supply of labor exist. अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं intro. The supply of labor is the total number of hours that labor is able and willing to work for a particular wage rate, जो मैंने अभी आपको बताया. Next, there are two types of supply of labor. One is individual supply of labor, यानी कि one worker की बात अगर हम करें तो. And then we will discuss aggregate supply of labor, like behavior of all the workers. So एक वर्कर की अगर हम बात करें तो वो ये है कि as the wage rate will rise, $10 per hour, $20 per hour, $30 per hour. At $10 per hour, I am working 8 hours a day. At $20 per hour, यहाँ पे जो है हम wage show करें, यहाँ पर hours of work show करें. So I am working 10 hours a day. At $30 per hour, I am working 12 hours a day. At $30 per hour, 30 multiplied by 12, जो भी एक आंसर आता है आपके पास. I am earning a sufficient amount, a handsome amount which is needed to fulfill my desired lifestyle. After that अगर wage increase हो जाता है तो I will start reducing my working hours. तो ये backward bending start हो जाएगा after X, if you can see. ये backward bending क्यों हुआ? Because
Now if wage rate is like $40 per hour, I can fulfill my lifestyle by working less. Like suppose अब मैं 12 आवर नहीं काम कर रहा, आई एम वर्किंग 10 आवर. फर्दर अगर वेज रेट राइज हो, मैं फर्दर 8 आवर्स की तरफ चला जाऊंगा एंड आई विल फोकस ऑन माई लाइफस्टाइल. दिस इज व्हाट द बैकवर्ड बेंडिंग इज. विद हाई वेज रेट्स इंडिविजुअल वर्क लेस एंड हैव मोर लाइजर. ठीक है ना. ये सिचुएशन है जैसे मैंने अभी आपको बताया. सो सप्लाई ऑफ लेबर मैंने अभी आपको बता दिया, ये सारा उसकी एक्सप्लेनेशन है बैकवर्ड वाला. तो नेक्स्ट इज लेबर सप्लाई टू अ फर्म और इंडस्ट्री. सो now we are talking about the supply of all the individuals given the wage rate. तो same behavior होगा कि as wage rate will rise from W1 to W2, workers will increase their supply. Like if there are 100 workers working, now 200 are willing to work at higher wage rate. So now he has given there are two types of supply. One is for the skilled workers whose supply is inelastic, and unskilled workers whose supply is elastic. Why? Because unskilled worker की थोड़ी सी भी wage आप increase करेंगे, there are number of workers available in the market and they will like, अगर 100 workers are initially in the market, they will come like 300 हो जाए. But skilled workers like managers and doctors, आप उनकी बहुत ज्यादा जब wage increase करेंगे like this, then supply will rise a little amount because it takes time to develop skilled workers like doctor बनना है, engineer बनना है, it takes 5 to 7 years of a higher education. सो आज का लेक्चर यहाँ तक हम रोकते हैं, सफिशिएंट है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे सप्लाई ऑफ लेबर टू इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई ऑफ लेबर. ओके जी, थैंक यू.